Okay, shall we start now? It's 10 Yes, madam. past Please, 11. please. So, good morning, everyone, and Good morning. welcome to this webinar on how to prepare for job interviews. Let me first thank Dr. Shailesh Yagnik, Mr. Manish Makad, Dr. Hayat Ahmed, all my senior colleagues, if they've joined, their allies, faculty, and dear students. I wish to thank our resource persons, Dr. Yagnik, Dr. Ahmed, and for graciously agreeing to be the resource persons, and especially to Mr. Manish Makad for organizing this webinar and doing all this paid work. Now, about 60 years ago, we had very few LI schools. In those days, it was difficult to find and recruit suitable candidates. Now, I find our students are much more capable and really techno-savvy. They can develop YouTube videos, design beautiful posters for webinars and workshops, prepare impressive PowerPoints, create flipbooks, etc., etc. Besides having this technology knowledge and having subject knowledge, it is extremely essential to have proper communication skills. This will enable us to help our users and to interact with the management of wherever we are working, because management support is very, very important. We should be able to convince our management about the importance of information and about the need to obtain more resources, especially money and manpower resources, besides material and machine resources, that is equipment. There is a saying in Gujarati, એક કહેવત છે ગુજરાતીમાં, બોલે તેના બોર વેચાય. If we are able to speak convincingly, we can achieve a lot more. We can sell more things. Some of our senior professionals have already retired. And over the next few years, many more will retire. So, dear students, the responsibility of taking this profession forward, the responsibility of making this one of the top professions will rest on you, will rest on your shoulders. To undertake this responsibility, hard work is very, very essential. Now, talking of hard work, this reminds me of the definition of a genius. We know a genius is an extremely, exceptionally capable person, a brilliant person. Now, what is the definition of a genius? How can we become a genius? The definition is 99% perspiration, persevo, and 1% inspiration, the intuition, the voice which we get from within. So that is the definition of a genius. 99% perspiration, 1% inspiration. So I wish, dear students, that all of you work really hard and all of you become geniuses. Thank you very much and God bless. Over to you, Manish bhai. Thanks, Ms. Barucha, for opening remarks and also setting the tone of the webinar. You are very right when we say that the way the profession is changing, there's a demand for a
very different set of skills, competencies, and the way we come across during the interview process. And that's the reason, our working committee also decided that this is something that we should be focusing on. So to start with, let me just give you a quick, pointers on today's session. Manish, excuse me, Manish, Sure. could you please be a little loud? Okay. Am I audible to Shailesh Bhai and Hayaji? Is it fine, or you are also having? Yes, you are audible. Yes. Okay, great. Okay. Yeah. So, good morning, attendees, once again. And having said that the topic itself is of relevance not only to the library science but across all the fields, we thought of having this session with invitees at the very experiential level. Yeah. So let me introduce you the speakers without going into further details. First, of course, we have our dear Shailesh Bhai Yagnik, and when I asked for his short introduction, he said that just tell everybody, I'm quoting Shailesh Bhai, that I am a knowledge worker, and over and above, I am adding that he has been, our one of the most respected, senior member of all of us. I mean, not only ADINET but entire LIS community, and having worked into more than 4 decades of his professional career, and having headed one of the largest libraries and made a lot of innovative and interesting changes into the way the information and knowledge scenario works. So he calls him as knowledge worker. And so we are looking forward to your inputs into this very critical aspects of our career. Yeah. So, Shailesh bhai, welcome. And coming to Dr. Hayat Ahmed, we had our very close interaction with Hayaji very recently, yeah, at SAP University itself, where he had we had such a wonderful seminar. When I was looking at the Hayaji's long, rather quite impressive pointers to his career, which spans almost nearly 18 years and across not only India but also going beyond our Indian geography. So he worked also at Royal Commission Libraries in Saudi Arabia. Having PhD, of course, in library science. More than that, he has won a number of prestigious awards. And as of now, as we know, the library itself where he's working has won again an award. So Hayaji, we are once again looking forward also to you for your experiential knowledge in this field. Yeah. And myself being, of course, librarian of DICT, and just to announce, Yogesh Bhai, our third resource person, unfortunately he had some event which he had to attend, so he will not be able to join us, but I will try to fill in his gap as and when required. Yeah. And attendees, all of you, of course, you are most welcome to raise the question. The plan here is Mr. Barucha, and of course both of you can rectify. The plan is that we will have 3 sessions, as I have indicated. The first session, and at the end of each session, we will try to pick up the questions so that which are relevant to the session. Yeah. And then, of course, at the end of the entire webinar, if time permits, we will take few questions. Although the webinar itself is in English, we will try to have it also in partly in Hindi, for the benefits of those who wish to also have it in communication in Hindi. And those who are having challenge in Hindi, for example, or English, you are welcome to raise questions in Gujarati also, and we'll see if we are able to answer your queries in the language which you prefer. So thanks for attending. I'm seeing a good number here, and let's begin
with the first topic. The first topic is resume, looking at the resume, which is a logical process when we are hunting for the job. First step is when we look at the when you send the application, whether online or offline, uh, the first impression without we being in person present is our curriculum vitae, CV, or a biodata. Yeah, and that is where our first session will focus on a couple of minutes, so that all of us have drafted our resume. We have sent across our resume, and so my question to I will start with Shailesh Bhai. Shailesh Bhai, you have been looking at the CVs over a period of time. Typically, what is the basic things that you would expect a CV to have? Shailesh Bhai, are you there? Shailesh Bhai, can you unmute yourself? Yeah, so my first question to you, Shailesh Bhai, was regarding the resume, that what should be the basic structure of the CV that you would like to see? Sure. First of all, let me, before we go to the resume, I may Sure. be allowed to mention one point. Go ahead. Those who have joined in time, let me say congratulations to all of you. Those who joined late, think this is the, webinar related to the interview. If we reach late to the destinated place, what will happen? So, Yeah. be disciplined when you go for such activity in future. So this is a very light remark, take it positively. That's one thing. And there is no as such, I would say a standard structure available. Okay. Many times, when institution, they ask for the they give the structure. Okay, this is the way, this is the format in which you provide the details to us. In that case, you are in the safer zone. But when they say, they give the, option to you, then I think, what you should consider is, header where you should give the phone number, email, because nowadays address is not making much difference, Then qualification summary, that's optional. Then you provide your education, experience, references, if you feel appropriate, if they ask for it. Then you have any international experience, exposure, professional affiliation, and the membership you have with, like, ADINET or ICE League or ILA kind of things, If you have done any publications, your presentations, those you should include, so that reflect your capabilities, how professionally you are competent and at which level you have taken participation in it, Then your language, fluency, whatever, is that, like Gujarati, Hindi, English. If it is other state, then you can mention the, if it is South, if it is a Tamil Nadu, you can say Tamil, in Andhra Pradesh, Telugu, in Karnataka, Kannada. If it is a Kerala, then it's a Malayalam, like kind of thing. Then if you've done any community services, you should talk about that also. Okay, because in the Corona time, many people have served the communities also. Then technology skills you have, any honors, awards you possess, throughout your career, so you do mention about it, and the leadership activities, if you have played, anything about it, So these are the major things, you should highlight in your CV. And some of the things which you should not mention is kind of, the, birth date, then the age, then the religion, then some of the things, you should try to avoid, because they are not required, that is what I want to say. Personal information, high school information, poor academic achievement,
empty language, old experience, irrelevant experience, Yes. I think that's important. Yeah. The word I you should avoid. I mean, don't use such things. So these are my observation of the I mean resume, because when I looked at it, any resume that I mean itself, one should able to judge the person's capability. So keep this in mind. Yeah, this is from my side. Thanks, Salil. I think I fully agree. Hayaji, coming to you and then continuing from what Shailesh bhai said. My question will be slightly different for you. Yes, what it should have, and partly even Shailesh also covered as to what one should be avoiding. But what are the areas which one should be careful about when drafting the CV? Because if you can tell us something about that. मतलब किस तरह Well, का इसमें जैसे yeah, कि yeah. मैं अभी अगर I, बताऊं I, किस तरह I की got one. कौन सी चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए Yes, yes. या फिर उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है Mm-hmm. Uh, First of all, thanks to ADINET for giving me this opportunity. And the whole intention for me to come here is just to help our community, our LIS professional, as the target group is LIS students and library trainees and junior librarians of those who are in the early career. So uh, the whole discussion will be keeping them in mind. So, in continuation, what Shailesh bhai suggested about the CV, agreed. There are times when these days universities and colleges, whenever you apply, they are asking for the your information, and that helped us the organizations to filter out the candidates. For example, they yes need X number of experience or Y qualification and whatever. Then after filtering out, finally they end up with CV, because CV is something which they definitely look at it, and CV is basically a face of that candidate in a way that how he like to present himself or herself. Now start with the what are the essential things. I think, in my opinion, whenever there can be two kind of CVs. One is a very general. You make it as a all the time. You keep it with you, the CV, and the specific CV should be there, which is tailor made. Tailor made means whenever you are applying for an organization, you see what is the job description there, so I'm able to connect with that or not. Do I have, for example, there is a job for a reference librarian, or in the technical section, or in digital section, or what is the requirement basically? What are the what are the things in that organization going on? So keeping those variables in mind, those things in mind, you redesign your CV. You tend to highlight few of the important areas, so the person who is looking to hire you, he definitely first, at the first glance, he will know, okay, his he has the experience, or he has the expertise, or he has something related with what we are looking in the candidate. So this is very important when you are uh, whenever you are, there is column in each resume skills, so in that skill you can highlight those things. And these days there is no hard and fast rule for CV. People are writing their objective, and after that, before I saw that people used to write education and all. Now people start about skills. They write skills, soft skill or hard skill or whatever skills, IT skills. So communication skill, they tend to write about it. So the important thing is that your profile should be something कि जैसे ही देखे कोई तो he feel को okay, this is the candidate I am looking, so okay he will just okay sort it out. And okay it should be very brief. It should be uh, uh, there should be spelling check many a times. There, grammatical errors should not be there. And uh, and one more thing, the copy paste thing. For example, there was a library trainee thing we were doing at SEPT, and I got many CVs. I will not name from which institution, but all of them were same. Means just the name is changed,
the photo is changed, but rest of the means it was look like a copy paste thing. So when the students are doing blib amlib and all, so it is expected they must have developed some kind of intellectual skill, intellectual, they are sufficient enough to make their own CV the way they want to represent themselves. So that confidence should be there. If it is not there, then they can take the help of some of the senior fellows. uh, See, I can tell from my example. When I did my blib mlib, that time what I did, I made my CV, and I showed it to my teachers, I showed to my seniors, even to librarians. And after so many, you can say, inputs from various people, that this will work, that will work, this will work, that will work, finally I come up with some ideas that becomes my CV. So CV is something that one has to be really very thinking seriously. It's not कि बस आपने उसको भर दिया and job done. No, it is very important. uh, uh, and Yeah, yeah, so yeah, means the important thing for me is, recently I saw some CV from this students of architecture and design. They are working as student assistant. Beautiful work they did. In one page they did everything, and this is yeah. what I like the most. I think too much text and writing uh, stories is not recommended. Nobody is going to see that. Nobody has time these days. Yeah, So yeah, make yeah. it as brief as it could be, and meaningful. Okay. Thanks, Hayat. I will just add the last few points before we move to the next theme. What again, comes to my mind is uh, correct information. Uh, होता क्या है कि we are quite enthusiastic कि हम कुछ we should write something. For example, hobbies, okay, or experience in certain tools and certain packages, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो तो उसके बारे में जानकारी. आई गिव यू एग्जांपल मैं देता हूं. हम लिख लेते हैं कि हॉबीज में रीडिंग. तो ये आपको पूछना बहुत जरूरी है कि मैं सही में रीडिंग करता हूं या मैंने सिर्फ लिख दिया है. क्योंकि अगर मैं आपको पूछता हूं कि ठीक है अभी आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, 99% of the answer, they are in gray areas. Okay, not only even न्यूज़पेपर भी पढ़ा नहीं होता है. सुबह पूछो कि आज की हेडलाइंस कौन सी थी, दे आर इन अ डार्क. ओके. सिमिलरली अगर आप हॉबी, अगर समझो रीडिंग के अलावा कुछ अलग लिखते हो कि हाँ ठीक है मैं योगा कर रहा हूँ, तो आप सही में कर रहे हो या फिर आपको फैशन लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मैं लिख दिया हूँ, या फिर आप कई बार सिर्फ एक छोटा सा आप आधा यहीं पे घूम के आ गए और आप लिख रहे हो वॉकिंग. तो ऐसी ऐसी चीजें हरकतें ना करें, क्योंकि पीपल टेक इट, योर सीवी इज एज हयाजी सेड इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू. तो अगर मैं एक दो सवाल अगर पूछ लेता हूं तो मुझे रिवील होता है कि शायद ये कैंडिडेट इतना ऑनेस्ट नहीं है, जो कहना चाहता है वो छुपा रहा है कई चीजें. वैसे ही होता है कि प्रोजेक्ट, अगर आपके पास प्रोजेक्ट में कोई आप बोलो कि मुझे कोहा का एक्सपीरियंस है, तो कोहा एक्चुअली आपने काम किया है या सिर्फ आप पीछे सिर्फ बैठ के सिर्फ देख रहे हो कोहा, या फिर आप स्विच ऑन करके लॉग इन करते हो, या सिर्फ आप इश्यू रिटर्न कर रहे हो. मतलब कि सिर्फ इज इट अ ट्रांजैक्शनल नॉलेज और एक्चुअली हैंड्स ऑन वर्किंग नॉलेज. तो ये सब जानकारी है, दीज इंफॉर्मेशन सीवी में आपको बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करनी है. मैंने कई बार देखा है लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे जानकारी है. अरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी मुझे भी इतने साल के बाद भी मुझे आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट जोन. तो जो हमारे जोन के बाहर का है, आई थिंक वी शुड बी केयरफुल कि जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक आवर सीवी लुक अट्रैक्टिव, वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए. ठीक है. हाँ है जी, हाँ कुछ कहना चाहते थे आप. And sometime I see people are writing declaration. I declare this and हाँ that, आई नो. or ठीक है. this authentic हाँ information. तो So वही कॉपी पेस्ट की before बात है सर giving ये. before giving declaration, they need to be really conscious of the fact that they really know it. Because in the interview, if the सही है. if the CV is shortlisted,
most of the questions Will be related interviewer to might that. ask from the CV itself. Absolutely, As you said, absolutely. what's your hobby? He said cricket. Okay, tell me about cricket. What हाँ did you बिल्कुल did on सही cricket? है, सही है, At सही है. what level you was playing at, Not only or you, but even whatever. in general आपको कोई भी एक and कप के बारे and में पूछ ले तो when it पता होना comes चाहिए to आपको. when it's come to the hobby, I got a one of my friend who is working in DRTC right now. जी. Long time back, I sent my CV for a review to him, and he said hobbies nobody is interested. uh, Not much required at your level, because I was working director at that time. So at the beginning, maybe you can put hobbies because you haven't much to show. Experience आपके पास ज़्यादा है नहीं, अब CV में कुछ columns तो डालने हैं, तो okay, you put hobby that time. But as you grow in the career, then you tend to remove some of the portion, and you tend to add some of other things. So at the beginning level, okay, if you want to keep hobby, it's fine. Otherwise, I would rather prefer if somebody has did some courses, some webinar series. These days, so many online Coursera and other courses available. On LinkedIn also, there is so many courses available. So if somebody is doing that along with the education, that's tend to give us more about the about that बिल्कुल, बिल्कुल, profile. बिल्कुल. Yeah, yeah. Yeah, thanks, Hayaji. And Shailesh bhai, if you have any few No, things only on as a one closing. Yes, yes, observation only I would say, yes, okay, yes, yes. you write in your CV which you can prove. Absolutely. Brilliant, brilliant. Yeah. You can stand Otherwise, by. don't mention anything. नहीं, Please, नहीं, नहीं. please, That's don't what. put yourself into inconvenient situation in front of Absolutely, others. absolutely. I completely agree with both of you. And this we all have faced because we have been not only giving interview but we'll also been taking interview and you get into a tight spot. So let's avoid it. Okay, so I will just open up for one or two questions from the attendees. If you have, then you can unmute yourself and raise it. Okay, we will also don't worry. I mean, if now if any question is not coming up to your mind, we will we take it at the end of the session also. So I will move to the the next part of the process. So you have your CV ready. You have taken all the precautions. You have refined the CV as per the discussions we had, and one fine morning you are going to attend the actual interview. Yeah, I am talking about the physical interview. We are not talking about online interview. We will right now be focusing on the physical part of it. Okay. Okay. Tusharji is asking what kind of irrelevant points we should avoid in the CV. Tusharji, we in fact mentioned it if you were there in the session very clearly that what are the Hayaji mentioned, even Shaileshji also mentioned what should not be the not worth mentionable points. Something, for example, you have very old experiences, something in your school you did some project or, you had some hobbies which are not relevant to any job. Yeah. Or you did some small, say certification course, if you, or say I stood in Hindi, I stood first, second in the 8th standard. Now those kind of achievements are not worth mentioning in the CV, and those we call it as irrelevant. Or suppose let me put, suppose if I am a society president, it's a very big position, yeah, but to this CV it's irrelevant, yeah. Or and if you're doing social service, yeah, then just you can make a passing passing note that yes, I'm a part of such and such area development committee. That's about it, but don't make it a very large scale picture on that. Another question that comes to me is whether it's necessary to put photos and references. Yes, I will, with your permission, Hayaji and Shaileshji, I will just answer this that, well, yes, if you put photos, recent photos, at least, it gives a clear, impression about, when, what kind of candidate I'm going to look at, but it's not essential. Let me put it that it is not essential. References, again, it depends because if you are a fresher, references,
If they ask you, yes, better to put it, because then your background or your other requirements, something that you have mentioned could be cross verified. Yeah. Yes, Hayaji. The photos, yes, you can put it nice, formal kind of photo would be preferred. If it is uh, party ki photo hai, not look good in the CV. So formal kind of photo, you can have one Agree. smiling Agree. face or something, so that gives some more idea about the profile. Along with that, brief information on the top. There is no hard and fast rule, but what I have seen that worked really nicely. Brief in your information, uh, your address, your email ID, and all, correspondence address, little bit of it, then objective, then your skills, then your education, then if you have some webinars or some papers or some conferences or somewhere you attend something, and links also these days are very important. You can put your LinkedIn profile with the link. If you have make one, um, any website, or you are writing any blog, you can link that too, so people will know, okay, what you really did something extra. And I think these days, when some everybody is doing similar things, how differently you are doing, or what different skills you have, that really going to help us. See, I did some interviews recently, library trainees, and few of the candidates which we selected were the ones who have highlighted profile. One of them was topper in BLib MLib, so clearly mentioned, so that really get the eyes of us. Yeah, Okay, yeah, isko shortlist karte hain. So yeah, these things you should do. If you did something which can catch the attention, so you should put it. And keep it brief, because yeah, nowadays nobody has time to read yeah, in detail. Just keep, yeah. So, and if there is any hmm, gap or something, do mention. And people might ask, okay, why this gap is there and all. So you need to clearly write the years also. This is one of the HR, he told me that these are the mistakes people are doing, they are not yes, mentioning yes, years. yes, And yes, absolutely. those tabular kind of things, try to avoid. Write in a single line your education or something. People are writing high school, inter, graduation, master, PhD, MPhil, blah blah blah, itne percent is university से this. Just write what are the degrees in which year from which university. And if really percentage is good or something, really you want to focus on it, okay, mention. If it is not so great, so try to just remove that part and Yeah. go So, ahead. Hayaji, I suggest, what we will do is, as you mentioned these, I would request if you can just make a small one page, bullet points of, the format in which the CV should flow. The overall, templates, there are good templates available, and then this we can then share it to the our ADINET members. Share, I would love to do that, but Yeah. I don't want to see that becomes a higher CV template, something is No, it floating in won't. the No, no, it market. won't be. I mean, no. This is just a because these the You points know, which are coming the, up. the When I'm saying to you, doesn't mean that you only will be on Shailesh where will I will also be there at the part of that thing. and But so see, that these questions are what kind of answered in a documentary what we manner. really see, what we really want to see, this people should think more when they are writing their CV, spend Agree, more agree. time, get more ideas Yeah, from themselves, from many places. absolutely, Yeah. absolutely. Okay, great. Uh, So uh, yeah, yeah, madam. Manish bhai, Yeah, Manish bhai, tell me. let me please remind all of you, let us talk a little more in Hindi also. Dr. Hayat, you may also like to do that, Sure, okay? sure. So Yeah. that we can reach out to our students. या बिल्कुल बिल्कुल Thank ओके you. ओके सो जैसे मैंने अभी बताया कि आपने सीवी बना दिया अच्छी तरह से और भेज दिया और आपको इंटरव्यू कॉल आ गया है सो हमारा जो दूसरा सेशन है वो इसी के ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी कि जब भी हम इंटरव्यू के सामने जा रहे हैं
तो किस तरह की पेशगी हमें करनी है, यू नो, किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से आपको ग्रीट करना है, या और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है। हाँ, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैलेश जी, अगर आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे तो। Before we get into that, I would like to draw the attention of all the participants. Yes, पहले तो I mentioned कि reach in time to the destination, and absolutely. when you go to that place, because I've seen number of students even in the faculty recruitment or even professional recruitment also, कि be calm and quiet. Go without stress. There should not be anxiety. What will happen to me? Don't think of that. Okay. Little bit deep breathing is required before you go to that room. That's one thing. Prepare yourself well to increase your confidence level, because only knowledge can defeat the fear. If you don't prepare well, then there will be a fear. मेरे को ये पूछ लेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये तैयार नहीं किया है, मैंने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट नहीं देखा है, मैंने आई मीन नए रेफरेंसेस भी नहीं देखे, नए जर्नल्स ये फील्ड में क्या है, नए डेटाबेस कितने हैं ये नहीं देखे, तो मैं क्या जवाब दूंगा इफ दे आंसर आई हैव नॉट अपडेटेड माई सेल्फ वेल. सो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, बिकॉज फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपीयर हो रहे हो, उसका विजन मिशन क्या है, वो सब देखो. लाइब्रेरी की विजिट आई मीन इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, देन look at the website of that library, look at it properly, what what they have, what they don't have. So would subset, I mean, then so when you enter there, so just ask, may I come in, good morning, good afternoon, whatever is there, may I take the seat. And another most important thing, when you take your seat, listen carefully all the questions. Yeah. In case of doubt, ask again or take the clarity on that questions. Okay, what you understood and what you are going to respond is correct or not. It is very important. ऐसे bluff मत लगाना, please. Yes or no is your privilege, but do not bluff. नहीं जानते तो ना बोलो, दुनिया में सबको सब आता हो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ऐसा. So in that case, say no, I don't know. I will have to prepare myself, develop myself in this. So you have that privilege, and answer the question to the points and based on knowledge, proof, evidence, and experience. So this is the top priority when you, go for any interview. Right? जी. So, sir, this is my initial observation. And what was the question? Yeah, question was कि हम जब भी इंटरव्यूअर के सामने अगर हम जब भी जाते हैं तो हमें किस तरह का जिसको बोलते हैं कि हमारा व्हाट काइंड ऑफ फेस अप, ओके, हमारा एटिकेट, ओके, कपड़े चाहे हो या फिर हमारा ओवरऑल स्टाइल हो. हाँ, तो because I got little diverse, when I was नहीं, just समझ गया मैं, telling that. समझ गया. So, I mentioned about when you entered about discipline, the interviewer, they expect, from you, कि भाई ऐसे सीधे कुर्सी खींच के बैठ न जाए, so there are certain things, dress code depends on what kind of organization, culture and country. I appeared for my car, I just went in simple dress, clean and, no tie, nothing, no shoot, nothing. But it all depends, आप कौन सी organization में कौन सी position के लिए जा रहे हो. If you are appearing for American Central Library or British Library, I would say we go with the tie and coat and kind of thing, It all depends, that's what I'm saying. And when you sit there, sit straight. झुक मत जाओ, ऐसे, kind of thing, So sitting straight is very important. Keep your eye contact with all the interviewers, Somebody's X is asking and उसके X से सामने ही आप बोलते रहे ऐसा नहीं. You should move your head around, look at everybody, keep your eye contact. That, it shows that you are confident when you are talking to them, नीची मुंडी करके बोलो, ऐसा मन नहीं होना चाहिए. That should not be that. So keep your eye contact. Do not reply looking at one person,
keep your hand proper, sir pe aisa khudli karna, I mean, aisa, I mean, no, those things will not be, when it takes negatively in the sense that you are upset. I mean, you don't know how to respond to the question. So you are, I mean, trying to recollect something. So don't give that kind of impression to the interviewer. So these are the, I mean, yes, and be comfortable when you talk to them. That's my suggestion. I mean, do not let down yourself, in front of anybody. But the basic foundation is that prepare yourself and appear. Okay. The body This is my language is also so Yes, important. yes, yes. Um, सही है. I mean, I would also like to add up to what Shailesh bhai said. Uh, from my own experience also, कि dress code is has to be neutral. Yeah. Um, so that neither it is too formal unless you are asked to, nor completely informal, that open neck t-shirt and jeans pants ke chale gaye, that especially in our kind of domain, we still don't have that much of informality. इतना मतलब इतना हम informal हम नहीं हो पाएंगे. So better to be a smartly dressed, मतलब जैसे जो भी लेडीज हो या जेंट्स हो, डिसेंट सा हम ड्रेस पहन लेते हैं जो कि हमें एक अच्छी इमेज दे. ओके. और जैसे कि छोटी सी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग दैट इफ यू आर वेयरिंग शूज, देख लो कि एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा ठीक ठाक लगे. ऐसा नहीं हो कि उसके वो मड के धब्बे हैं थोड़े और पहन के आ गए तो लेट्स, और या फिर स्लीपर्स या फिर सैंडल्स. हाँ, सैंडल्स अच्छी तरह के तो बात अलग है, बट ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुरंत व्हेन समबडी लुक्स एट यू, वो एक स्ट्राइक कर जाता है. इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ मैसिव डेंट इन योर पॉसिबिलिटी, लेकिन एक चीज है जो हम अगर हम अवॉइड कर सकते हैं उसको बेटर टू अवॉइड करनी जरूरी है. और एक चीज मैं बहुत बताना चाहता हूं कि खास करके जब भी आप इंटरव्यू में रूम में आप दाखिल होते हो, तो एक आपके चलने का तरीका, योर वॉकिंग स्ट्रेचर, एज शैलेश भाई सेड कि एक ऐसा नहीं कि सीना तान के चढ़ो, बट एटलीस्ट दे शुड फील दैट यू आर नॉट कम टू बैग द जॉब. Yeah, you have come with a confidence, you have come with a set of skills, and you are coming with a smiling face. Yeah, that at least एक confidence लगता है इनको कि हाँ ये बंदा हमारी टीम में शामिल हो सकता है. ओके. और एंड समथिंग, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए. या समथिंग आई हैव सीन वेरी ऑफन कि मोबाइल अनटाइमली वहीं पे बच जाता है. तो not only we get distracted, but even the rest of the panel also becomes unnecessarily restless. Hayat ji, few points from you. I think most of the important points have been covered by you people, but I have few more to add. Uh, to add what Barucha ma'am says, body language. I think it Ji. should be not uh, aggressive but assertive when Yeah. you enter. And one thing we should not forget, enter with a smile. I think that will Yeah. start smile in a way that makes the job easier. हमारा जो भी लोग बैठे हुए Yes. इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके Yes. लिए भी Yes. थोड़ा सा इजी हो जाता है कि जो आ रहा है थोड़ा स्माइलिंग है. ओवर स्माइल नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस स्माइल होना चाहिए. और शो पॉजिटिव posture, body language, enthusiasm, सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड बी देयर. जी. जी. अच्छा, वो बिल्कुल. सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें आती भी जब है, जब मैंने देखा है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, जैसे कोई कोई टॉपर है, उसकी जो जो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, और कोई और कैंडिडेट है जो कि इतना अच्छा शायद नहीं उसने तैयारी करी है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल. लेवल अलग होगा. तो बिल्कुल. तो जो मतलब वहां पे जाने से पहले मतलब वहां पे आप जब पहुंच रहे हो, तैयारी करनी बहुत जरूरी है. तो जो हम्म. हमारी जो थीम है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, तो आई थिंक इंटरव्यू से पहले भी बहुत सारा प्रिपरेशन होता है, जिसमें मैं बस 1 मिनट अगर लेना चाहूंगा. श्योर. अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं एक जगह पे जॉब मेरी सिलेक्ट हो गया था, मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था, और उसके बाद आया कि साहब आपका इंटरव्यू है इस तारीख को. मैंने क्या कि उनकी वेबसाइट पे किया, जैसे शैलेश भाई ने कहा कि गो टू द वेबसाइट सी.
मुझे वहां पर उनकी पूरी लाइब्रेरी गाइड मिल गई जी कि उनकी लाइब्रेरी गाइड, मतलब लाइब्रेरी गाइड में मतलब पूरा मैनुअल था, उसमें क्या फंक्शंस हैं उनके पूरे फंक्शन। मैंने वो जो लाइब्रेरी गाइड थी एक बार नहीं 3 बार पढ़ी मैंने, इसलिए नहीं कि मेरा उस जॉब में हो ही जाए, तो मेरा वो यस यस गोल था। मैंने कहा इसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और बड़ा उन्होंने अच्छा लिखा था। डॉक्टर शिवराज थे केएल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी, उन्होंने अच्छी लाइब्रेरी गाइड लिखी थी, मुझे कुछ सीखने को भी मिला। जी मैंने उसको 3 बार पढ़ डाला, तो मेंटल मेकअप हो गया कि भाई इसी से क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाले हैं। तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो जब मैंने और आए भी क्वेश्चन उसके अंदर से, तो जैसे आजकल मैं एक एग्जांपल हिंदी में बात कर रहा हूँ तो खुल के कि स्किल्स की बहुत बात होती है। मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा ताकि लोग थोड़ा सा इजीली समझें इस चीज को कि आजकल जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दूं कि लोग क्या बात करते हैं कि वो ऑफ पे भी छक्का मार लेता है, लेग पे भी छक्का मार लेता है, ये उसका हिटिंग जोन है, ये उसका स्ट्रांग एरिया है ना। तो वो स्ट्रांग एरिया अपने आप बना नहीं है, उसने स्ट्रांग एरिया बनाया है प्रैक्टिस कर करके। तो अगर कोई कोहा से सवाल आ गया तो वो उसका स्ट्रांग एरिया है, डी स्पेस से आ गया तो वो उसका स्ट्रांग एरिया है, या उसको और उसने कुछ किया है कहीं पे, पेपर्स लिखे हुए हैं, उसका स्ट्रांग एरिया है। तो या वो कस्टमर सर्विस में उसने बहुत साल काम किया है, वो उसका स्ट्रांग एरिया है। स्कॉलरली कम्युनिकेशन में उसका स्ट्रांग एरिया है। तो क्या क्या उसके स्ट्रांग एरियाज हैं। आप जितने भी लोग हैं अप्लाई करते हैं, उससे पहले देखिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और आपके स्ट्रांग एरिया से कितना मैचअप करता है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना सीवी डिजाइन करके और मेंटल मेकअप करके आप रूम के अंदर जाइए। और बिल्कुल कुछ बिल्कुल क्वेश्चन जो हैं, जी कुछ जी क्वेश्चन पहले से तैयार करके रखिए कि ये सवाल तो पूछा जा सकता है, तो उसका जवाब क्या होगा। जी वो जी जवाब बिल्कुल जवाब भी आप लिख के अपना तैयार करके 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए, समझ जी लीजिए। और जी ऐसा होता है इवन सेप्ट के इंटरव्यू में भी, मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। आई वाज एक्सपेक्टिंग few questions which have come, and I was able to answer, and for that too I discussed with somebody who is a very senior librarian in IIT, and कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई भी कैंडिडेट है आप में से, वो अपने सीनियर्स के पास, लाइब्रेरियंस के पास जाके बता सकता है साहब मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या उसके जवाब अप्रोप्रिएट आंसर होंगे। तो उससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी, तो आपका कुछ तैयारी पहले से होगी। जी तो जो जो सारे डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें, तो डूज में तो सारी चीजें हो गई कि एंटर विद स्माइल, की गुड बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एंड इफ यू डोंट नो द आंसर, से नो, डोंट फील yeah शाई के भाई अगर। so yeah so we will But focus and on that last Hayat last ji on the last next point session last point yeah and it is very important for me. Don't lie. Don't absolutely lie during the interview. वो कहीं ना कहीं आगे पीछे पकड़ लिया जाएगा। तो absolutely अगर आपने सही नहीं है किया है, नहीं आता है, नहीं पता है, तो उसको कुक ना करें वहां बैठ के। और वो जो लोग बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी सब एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो दे कुड फिगर्ड इट आउट कि ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, या क्या जी है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल दैट आपका ऑटोमेटिकली पूरा केस कैंसिल हो जाता है अगर आपका सही है झूठ बोला तो। absolutely yes 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 So these are Just a few points. moment, just a moment. yeah It would be useful to see the website of the organization in which we are correct going to give the interview, so yeah that we would know what is happening, what is their work nature, etc. Bilkul. Yeah, I completely agree with Ms. Barucha, because when we are going to potentially join the organization, we should have some idea about the structure of the organization, structure of the library, if it is available over there, the vision, mission, and how our skills can contribute to its overall progress. Yeah, and this I've seen in my corporate space, that when we join, you are not taken for your skills. They would like to see whether you are able to match up to their requirements which are going to come up. तो ये करना ज़रूरी है कि आप समझ लें कि कंपनी अगर इस दिशा में जा रही है, तो आपके जो स्किल्स है, आपका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है अब तक का, अगर वो कंपनी को फायदा हो रहा है तो ही फिर आपका कोई चांस है कि वो आपको लेंगे। वो बहुत जरूरी है कि आप, जैसे है जी ने बताया, कि आप फाइन ट्यून कर लो। आप चीज वही है, आप कहना चाहते वही चीज कहना चाहते हो, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर देख लिया है, तो फिर आप उस ढांचे में डाल के आप बात कर सकते हो। या
So thanks. So we'll then now move to the most important part of the webinar. That is, what kind of questions typically are asked, yeah, and why they are asked. वो ये जो सवाल किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, और उससे आपके आपके बारे में और आप कितना जानते हो, किस विषय में जानते हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करना यही मकसद रहता है. सो द होल इंटेंशन ऑफ दीज आस्किंग दिस क्वेश्चंस आर टू नो अबाउट योरसेल्फ and also to know about how far you are knowledgeable in the given field, yeah, because that is how you will be picked up. So let me start with first the question, and then we will go to the our expert panel. So the first and foremost is always कि जैसे कोई आता है तो हमें उसको एक if I am the interviewer, मैं चाहूँगा कि जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसको एक थोड़ा सा अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एंशियस है, he is already into kind of tense कि what kind of question would be asked to me. So we will tell them कि ठीक है आइए, please take a seat, and हम बताएंगे कि as soon as he or she shows us the file, हम कहेंगे ठीक है आपके बारे में बताइए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एंड दिस इज समथिंग आइस ब्रेकर. आप ये जो एक सिचुएशन है जो हमने सभी ने फेस की है. आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस हैज फेस्ड इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट, एंड कि आपके बारे में कुछ बताइए. तो शैलेश जी, अगर आप बताएं कि ये सवाल पहले तो क्यों पूछा जाता है और क्या कहना जरूरी है. First of all, this is a normal, usual question Yes. that everywhere the candidate they will face, and this is the first trump card. You need to throw it now. One way you have the opportunity to prove yourself, Kebi, how far I am best candidate for this. Correct. That is the one thing. And आप जब ये mention कर रहे हो, तब you can mention about the hard skills, means the hardcore subject knowledge and the soft skills. Okay, this is what something there, how you achieve soft skill, talk about the achievement, so many other things. And उसी में जो interviewer है वो आपका communication भी देख रहे हैं साथ में कि आप keep your आप कितनी गलती कर रहे हो, कहाँ आप घबराते हो बोलने में, कि how fluent in communication. So they judge you from the communication point of view also. Okay, I mean but here you should be very careful. जब ऐसे questions आता है तो keep your voice and tone polite. बिल्कुल. Clear pronunciation. I mean हड़बड़ी, repeat हुआ, ये हुआ, इधर से ऊपर पीछे गए, है नहीं. Clear pronunciation. Speak slow but steady. That will give you confidence. So this is the most important thing when you're talking to them, when you introduce yourself to them. Say I am so and so, because your CV तो है वो लोग के पास. CV नहीं है ऐसा नहीं है. CV तो है, but apart from CV, what you would like to tell them. What is your achievement? Suppose I have worked with A, B, C, D organization. So I joined in so and so year. What was my contribution? Why I left to and why I went to. I mean, that question will come later. But Yes. why to be? What is my contribution? Then C. So that indicates that okay, you have moved from one place to another place to contribute more and more. In the process, you you enhance your knowledge, capabilities, skills. To do the more things. So here you need to talk about the past, present, and future. This is the first impression you are creating over here on the panel. Your answer should be tailored answer as per the role and library which you are going to join. That is more important. Meanwhile, try to identify the people, sitting there, the personality. I mean, what kind of audience sitting? I mean, audience means the interviewer sitting there. वो कैसे है वो देखो. But when you talk to them, be professional when you talk to them. But
speak with the patient. You should be passionate about your own profession. So, that speaks when you talk to them also. No confusion while talking. Do practice at home, as Hayat has already mentioned, कि भाई आप, घर से practice करके जाओ. And I mean, be positive in life. That's what I would say. Okay. Hayat ji, I would put a slightly counter question on this कि जैसे शैलेश जी ने बताया कि किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए ज्यादा. ओके. आप अगर फोकस करें कि कौन सी चीज, at least 2 or 3 points which should definitely be avoided when you are introducing yourself. Definitely be avoided. Avoided जी, मतलब ये डेफिनेटली मुझे नहीं करनी चाहिए. अगर आपके जहन में कोई है तो if you have specific examples, तो किस तरह से. अच्छा, इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ, जैसे आपने बोला कि आइस ब्रेकर होता है ये एक जी सवाल. जी जी बिल्कुल. और ये अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, और जी. ये एक तरीके का आइस ब्रेकर के साथ साथ मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है कैंडिडेट करेक्ट के लिए. करेक्ट करेक्ट. उसको एकदम प्लेन एरिया मिला है, कुछ उसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि जो जॉब प्रोफाइल में मांगा गया था, मैं कहीं ना कहीं से वही शख्स हूँ और मैं वही कैंडिडेट हूँ जिसकी आपको जरूरत थी, और ये मेरा एक्सपीरियंस है. तो टू कनेक्ट द डॉट्स के उस तरीके से मैं उस प्रोफाइल में सेट बैठता हूँ. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें इसको बहुत स्मार्टली इसको आंसर करना चाहिए, जी कॉन्फिडेंस के साथ, और बहुत ही कम लफ्जों में और पूरी बात कहनी चाहिए. और ज्यादा जो अवॉइड करने वाली बात है, मैं कहूंगा कि बहुत लंबा आंसर कोई भी इसको ना दे. टू टेल मी अबाउट योर सही है एंड सही है यू बिल्कुल. आर गोइंग फॉर करेक्ट अपने करेक्ट दादा करेक्ट. नाना की भी कहानी ये सुना ज्यादा रहे होता हैं. है. तो नो, सही है. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आप सही बिल्कुल है. टू द पॉइंट बात करिए अपने बारे में. जो जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, अगर आप समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, उनको सुनने में अच्छा लगेगा. देखिए, गाना वही सुनाइए जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे और एब्सोल्युटली. और उनके समझ में आए. आप उनको वो चीज बता रहे हैं जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बिल्कुल, उनको, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ हाँ, डिफरेंस. तो आपका बिल्कुल. आप अब वहीं से वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपसे. तो या उनके अंदर पहले क्वेश्चन से ही इंटरेस्ट जनरेट करवाइए अपने अंदर, ट्रू क्यूरोसिटी ट्रू. उनके अंदर हो आपसे और ज्यादा सवाल पूछने की. तो एब्सोल्युटली. तो आप इस तरीके से, जब आप जैसे आप इसमें और भी स्मार्टली लोग खेलते हैं कि उसके अंदर वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि उसी से अगला सवाल आ जाता है, और उसकी आ भी जाता तैयारी है. लोग करके बैठते हैं. सही है तो सही वो है एक सही अलग है. ही लेवल की बात मैं बता रहा हूँ. लेकिन यस यस. ऐसा भी लोग करते हैं कि वो बताते हैं कि मैंने कुछ ऐसा किया, मैं लास्ट प्रोजेक्ट में, मैं एग्जांपल, जी 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 और जी. एक साल में हमने ये प्रोजेक्ट किया. तो और वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि ये लोग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप जा रहे हैं. तो हाँ, फिर तो वो वो कनेक्ट हो पूछेंगे, जाता अच्छा है. आपने एक साल में वो कैसे हाँ. किया, क्या क्या हम्म. कितने एम्प्लॉइज को आपने हायर किया, सही क्या है आपकी सही है. मेथडोलॉजी थी, क्या क्या आउटकम रहा, क्या डिफिकल्टीज थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या रिजल्ट रहा, वट एवर. तो आपके पास पूरा, आपने एक तरीके से उनको अपने तरफ बुला लिया, कि अपने बुला लिया. स्ट्रेंथ में बुला लिया, जो आपकी सम स्ट्रेंथ एरियाज जो है. आप कहना चाहते हो. हाँ, तो स्ट्रेंथ एरिया की तरफ आपने अट्रैक्ट कर लिया. तो ये जो फर्स्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है, इट इज अबाउट योर स्ट्रेंथ, अबाउट योर पर्सनैलिटी, about your past experience, and you give them the chance to कि वो ओपन आपके अप. पास आके आपकी बिल्कुल प्रोफाइल में और ज्यादा झांके. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं भाई, बहुत आई थिंक वेरी वेरी एप्ट आंसर शैलेश भाई एंड हैज जी. So now the icebreaker has been done, and now I am ready to face the next level of interview. And the question that most often gets asked to me is कि why should I hire you? What is it that you are bringing along with you that makes you eligible candidate for this given position? So in this ये मैं कहना चाहूँगा, here the focus is on the skills. आप कौन से skills, formally, informally, certification, जो भी कहो, how you have brought it to the table, and how you have used, and whether, जब most importantly, ये organizational need को match कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले के जॉब में या फिर किसी तरह से you have acquired a qualification या फिर certification which is good, which is tough also, लेकिन ये जॉब में उसका रेलेवेंस नहीं है. या सो मेक श्योर दैट यू आर, जैसे हैज बताया कि यू आर एबल टू कनेक्ट
कि उनकी क्या नीड है और आपके पास स्किल क्या है और वो आप कैसे मैच करोगे. So my question to Shailesh bhai will be कि जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि why should I be hire you, तो what will be the kind of answer they would expect. किस तरह का जवाब will be एक उनको पॉजिटिव सेंस एक डायरेक्शन में देगा आपको. If I recall my interviews, I mean, in all the organizations, So, I mean, first I'll talk, my own experience, then I'll theoretically, whatever is there that I'll try to explain. But try to bring those experience, and how you are going to add value to the to the new setup. Okay. What is the gap? What is the vision and mission, and where the gap is then, and how you are going to fill up the gap in that with the resources, with the services. That's a straight arrow going to the vision and mission. Correct. So Correct. that is the most important point. Even I tell you, when I joined MICA, there were 10 candidates. Not 1, 10 candidates, and the all experts were there. They said, we don't have anything. Okay. So I know they don't have anything, and the organization run by the industry people, they don't have academic, the flair with them. So, at that time only, I have drawn the whole thing on the paper with handwritten, okay, the library kaisi hogi, what kind of resources will be there, what kind of services will be there, what kind of timing will be there, how much staff requirement will be there. Everything, I prepared and I went so well, So, fortunately, I had experience of operations research group, there is a market research, media planning and everything. And the MICA was going to serve the advertising industry. So everything was matching, So, but my economics background helps, But at the end of the day, let me tell you, whether you are from economics or you are from science, but the library profession teaches you, making you capable in such a manner that, Dr. Kumbar is having, economics background, but he is, doing very well, excellent in IIT. So ultimately, library education makes you capable to handle any kind of library. Absolutely. That's a one point. Sahi hai. And why we should hire to you, so then show that, you have skills, experience to the job and deliver great results to the organization. You have to give that kind of confidence, Bilkul. Emphasize on key skills, fit and great addition to team. I'm going to get, value addition to your team, They should, feel of it, Make their life easier. When because when you join every organization, the people are not same, but only how to handle the people, ultimately, you know very well, help them to achieve more, performing required duties, not just capability. Okay. Performing, they are concerned with at the end of the result, not the how much efforts you put in it, but what result you deliver to the organization. You deliver. That matters, So they keep all those things in their mind, and speak honestly, your strength, the talent, work experience, your professional development, कि okay, मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, that is also very important, from my point of view. But basically, you should able to prove yourself, okay, what you have is this, what you don't have is this, and I am capable of doing this. Yeah. Absolutely. In one line, I would say. Yeah. Correct. So filling the gap, as I can clearly state कि जहाँ पे ये एक अभी एक जगह है जो कि खाली है, जो लेकिन उसकी बहुत अहमियत है, उसके बिना ये अधूरा है. आपकी आगे की जो प्रोफेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो अफेक्ट हो सकती है, जहां पे कि मेरा जो योगदान होगा वो एक काफी हद तक वो चीज को वो भर पाएगा. I'll tell you one experience of Asian ground Bori at Baroda.
I was Yes. working with Operations Research Group and I was selected in ABB. I asked them, okay, what will be my role? They simply, you have to maintain what we have. I said, I'm not interested. Yeah. Yeah. They were offering more money to me. I said, I'm not interested. So Yeah. ultimately, the challenging job will give more opportunity to grow in life. बिल्कुल बिल्कुल. Hayat ji, Yes. few things from you. Yeah, on the same question. जैसे ये साउंड करता है क्वेश्चन व्हाई शुड वी हायर यू, तो थोड़े लोग तो घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन बिल्कुल से. बिल्कुल. तो थोड़ा स्केप्टिकल है भी इसकी जो लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की थोड़ी सी, और वो इसलिए है कि वो चेक करना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा टफ सवाल भी आता है जिंदगी में या पूछा जाता है, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड दैट. Absolutely. कितने सुकून के Yes. साथ, कितने फैक्ट्स के साथ, Yeah. और किस एक्सपीरियंस के साथ आप उसका जवाब देना चाहते हैं. वो ये आपका टेम्परामेंट भी चेक करते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हाउ बिल्कुल. यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर आंसर. Correct. दिस इज अगेन अनस्ट्रक्चर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसा वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ था उसी तरीके का ये भी है, लेकिन ये जी. थोड़ा सा और पिन पॉइंटेड और टारगेट है. तो जैसे शैलेश भाई ने कहा कि अगर आप गैप एनालिसिस कर लें और गैप ढूंढ लें तो आपके लिए आसानी हो वो जाएगी, अच्छा आप रहता है. उसको. हाँ, हाँ. लेकिन अभी जो हम LIS ट्रेनीज की बात कर रहे हैं और जूनियर लेवल स्टाफ की बात कर रहे हैं, देखिए सीनियर लेवल पे अलग तरीके का मैनेजमेंट रोल होता है और अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन भी अलग होते हैं, सेम क्वेश्चन के मतलब मीनिंग अलग हो जाते हैं. लेकिन जब जूनियर लेवल पे हो रहा है तो इसको मेरे ख्याल से जो हमारे स्टूडेंट हैं LIS वाले और जो जो प्रोफेशनल्स हैं LIS प्रोफेशनल्स, हिंदी में उनके लिए बात कर रहा हूँ ज्यादा, तो वो उनके लिए कि टेल मी अबाउट सॉरी व्हाई शुड वी हायर यू, तो इसमें वो वही बात लेके आए कि देखें कि कहाँ पे जो प्रोफाइल मतलब जो जॉब छपी थी उसमें क्या क्या चीजें थी, और मैं उन उन एरियाज में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इन पास रोल्स में. मैंने जैसे मैं IIM में ट्रेनिंग था, या मैंने माइका में काम किया एज ए ट्रेनी, और अब मैं देखता हूँ कि इसी एरिया में आप भी काम कर रहे हैं या आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसमें मैं फिट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ. इस तरीके से आपको कुछ आई विल बी मतलब आपको इस सही तरीके है. से, सही हाँ, है. उनको सही है. बताना है कि भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको फुलफिल किस तरह से कर सकते हाँ हो. फुलफिल करता बिल्कुल हूँ. फिर बिल्कुल. और भी अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स फैक्टर है, आप उसको हाईलाइट करना चाहें, अगर टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप नहीं किया, क्योंकि आंसर आपको एक शॉर्ट टाइम में देना है, तो इस टाइम पे आप उस चीज को ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंशियल नॉलेज. इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सर्टन वेरी स्पेसिफिक नीड जो कि लाइब्रेरी में आपने एक स्टडी करके आपको पता चली है, and you have a very specific skill, yeah, to support that need. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये लोग RFID इंप्लीमेंट करने वाले हैं, या फिर अभी पर्टिकुलर्स ऑटोमेशन नहीं है वहाँ पे, या फिर ऑटोमेशन है लेकिन अप टू ओनली सर्टन लेवल है, और दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एडवांस लेवल ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और LMS, और ऐसे समझ लीजिए कि उनको आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे फैकल्टी पब्लिकेशंस वगैरह का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मांग रहा है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. This is where you can specifically chip in. You don't have to accuse them. आपको कहना जरूरी नहीं ये नहीं है करके, लेकिन आप कह सकते हो कि मैं इस एरिया में भी मैंने काम किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो हम मिलके ये चीज को आगे बढ़ा सकते हैं. Which will be beneficial to the organization as a whole. And this is what actually has happened even in my career also. Of course, I am not going to spend time explaining that. But yes, I mean, this is one area that one can highlight कि ये organization need है और यहाँ पे मेरा ये योगदान होगा. Thanks. So then we move to the slightly more analytical type of questions. इसमें ऐसे पूछा जाता है कि अगर आप experienced हैं, उसके बैकग्राउंड पे बता रहा हूँ, दैट व्हाई आर यू लीविंग द करंट जॉब. ये सवाल एक तरह से पेचीदा होता है.
क्योंकि अगर आप कहो कि मैं अगर फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, ये बहुत क्लीशेड कॉमन आंसर है, लेकिन दैट डजंट गिव मी एनी क्लू। तो यहाँ पे किस तरह का मुझे रिप्लाई करना है, विच इज बोथ genuine, yeah, and which will also trigger a kind of sympathy, yeah, for the candidate, that yes, I think this person has reached a level where he needs to step up. Shailesh ji. Pardon? Again. Okay, the question here was कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये अभी अभी जो काम कर रहे हो, अगर आप यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, तो क्यों आप इसको छोड़ना चाहोगे, तो किस तरह का रिप्लाई मुझे इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर मैं Why सिर्फ you are कहूं leaving the job? जी बिल्कुल, करंट जॉब, इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड और आप नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये सवाल काफी हद तक पूछा जाता है कि व्हाई आर यू लीविंग द करंट जॉब। The obvious question, reply would be the better prospect, but better prospect in what way? तो यहाँ पे किस तरह का जो हम रिप्लाई करेंगे, जो कि सही होना चाहिए। I think Shailesh ji has connectivity issue. Madam, with your permission, I would like to pass on to Hayat ji. Certainly, certainly. Yeah, Hayat ji, I think let us, we are running slightly tight schedule, so please. Yeah, so the question is why you are leaving the organization. Absolutely. Okay. Current organization, ji, bilkul. See, Shailesh bhai, I have just passed on the answer to... Let him complete. Yeah, then because you can... some Yeah. internet. I mean, No, it's fine. It's fine. Yeah. Okay. So, I think जो पूछ रहा है तो वो आप उसको पॉजिटिव वे में इस तरीके से बताएं। कभी भी ये नहीं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फंसा हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं निकलना चाह रहा हूँ, या मेरी सैलरी बहुत कम है ना। तो ये इस तरीके के जवाब बिल्कुल ना दे, बिल्कुल, है ना। ऐसे मतलब चाहे सिचुएशन यही हो, लेकिन इस तरीके के जवाब ना दें तो बेहतर है। तो आप कहें कि फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल, तो वो तो आप बोलेंगे, लेकिन आप उसमें ऐड ऑन करें ऐसी चीज के भाई जैसे इट विल बी मोर फुलफिलिंग फॉर मी टू एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आईआईटी में अप्लाई किया है, तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईआईटी, फॉर ऑर्गेनाइजेशन आईआईएम, फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टेप, तो इट विल बी मोर फुलफिलिंग एंड इस तरीके का कोई जवाब इसमें ज्यादा काम करेगा। और वो उनको भी पता है कि आदमी ने अप्लाई किया है, शॉर्टलिस्ट हो रहा है और मूव करना चाह रहा है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा है तो फिर उसमें डेफिनेटली उसको ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मुझसे भी पूछे गए कि मैं जब सऊदी से आया, मैं बहुत कम टाइम के लिए साउथ इंडिया रहा, फिर गलगोटिया में भी कम टाइम पे रुका, तो जब इधर आया तो इधर पे भी सवाल पूछते हैं लोग। आप अगर जल्दी फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप then you can go back and say I tend to work long time in that organization as well, and आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन सारे आंसर जो हैं जेन्युइन होने चाहिए, जो आप जिनको जस्टिफाई कर पाए कौन सी ग्राउंड्स पे आपने वहां से मूव किया। तो हाँ, तो आई थिंक उसमें बेस्ट ये है कि अगर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं जहाँ पे ज्यादा आपको फुलफिलिंग रहेगा, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा और उसकी रेपुटेशन है, आपको सीखने को मिलेगा, आपको करने को मिलेगा, आप फील करते हैं कि आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप वहाँ के प्रोजेक्ट्स में ज्यादा आपने जो पढ़ा है कि वहां पर जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आप उनमें इंटरेस्टेड हैं उस तरीके के काम करने में। जैसे एक जगह पे एक आदमी ने बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, लेकिन उसने वो छोड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो सर्कुलेशन में था एंड ही वाज नॉट हैप्पी, और उसने अपने बॉस से जाके बोला भी कि भाई मैं सर्कुलेशन में बहुत लंबा काम कर लिया, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो वो कह रहे भाई अपने पास तो यही इस वक्त है, अब हमारे जो लोग सेट हैं रेफरेंस में अलग हैं और टेक्निकल में अलग हैं, हमारे पास लिमिटेड लोग हैं, तो हमारे तो सर्कुलेशन में ही है, देखते हैं फिर आगे चल के। तो वो उसने अप्लाई किया फिर कहीं और फिर जब उससे पूछा गया तो उसने यही जवाब भी दिया कि भाई मैं सर्कुलेशन में काम कर रहा हूँ, आई वांटेड टू वर्क इन अदर एरियाज इन माय ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नॉट मच स्कोप टू डू बिकॉज़ द थिंग्स आर क्वाइट सेटल्ड एंड फिक्स्ड इन नेचर, सो आई एम लुकिंग बिकॉज़
this is my interest area, this is this and that. तो इस तरीके से आप honest genuine answer दीजिए. I think बिल्कुल. that will work. Okay, शैलेश भाई. Uh, management is very smart. Whatever बिल्कुल. answer we give, they know Yes. very well why we are moving, out of the organization. Yeah, But yeah, yes, what Dr. Hayat says, when you leave the organization, you leave your flavor in that organization. बिल्कुल. Yes, we are losing a very good candidate. I mean, and the usual question, I mean, I believe in telling truth to the organization, So I mean, I said these are the reason 1, 2, 3, 4. I mean, I'm going for better prospect. Yes, I'm going for better salary. I'm going for better responsibility. I'm not going to grow. Let organization understand. If Yes. they have not given opportunity. So when the next candidate is coming, so they know very well how to treat the library professional. When I Yeah. left one organization, he said, "Okay, why you are moving? We have given everything to you." Then I said, okay, I have done my best. I have exhausted myself. I have nothing to contribute to your organization. I'll be taking salary only simply just for sake of maintaining your own premises. That my moral ethics will not permit me. So let me go to the other place. Let me work. Let me contribute there. Let new person come over here. Let new skills, all these things come over here, and let your place also grow. Yes. 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 So, but it's all jugglery of the language, I mean, kind of language. But only I would say, okay. I mean, I spoke, it was my time, but I would say, I agree with Hayat, keep your, I mean, relations very nice when you leave the organization. Your language should be such that you try to justify your best that, this is the reason I'm going. So, but the fact is that every organization is smart. They know the people, HR people know when they take the exit interview, okay, why you are going out. Yes, Sailesh bhai, thanks. And this is something one should be honest, very very clearly, because the salary definitely could be one of the key factor in changing the job. But very often it happens, like it has happened also in my case, that I moved to a different organization at a lesser salary. Yeah, because I could figure out that the kind of area in which this particular new opportunity is happening, I'll be more comfortable, and if I am more comfortable, my growth will be far more faster than my current role. So I moved from central government job to a private job at a 30% salary cut, and believe me, I did not regret, because again I'm making it a point that if you are confident in the area in which your contributions will make a huge difference, you say so. You say to your interviewee that, look, this is what I am doing in my current job, but I feel my contribution to that organization is limited, because obviously it works in a particular way, but I am looking a much larger role, much contributory role in the role that you have given the candidature. So this kind of the honest answer connects with a positive vibe. With that, I will move to the next level, that the interview has already started. You have given your background. You have also given them as to why you wish to to join, or rather you are leaving. So your expectations, expectations about the job have been made clear. They have also made started making the understanding about your skills level. At this point, a question comes, that when you say that I can make, difference, I can make impact, there'll be very specific questions about how will you, for example, say increase the library usage, how will you increase, say introduce new library services, or say, the questions like that, which are theoretical in nature, but how we should answer them. You can give me, maybe 2 or 3 points from each of you. Shailesh bhai.
So, I mean, first of all, I'll ask myself, okay, how the librarian and the library become part of the user's life. बिल्कुल. So, if I ask this question, then I'll get the answer. I always ask, okay, my students are getting up early in the morning and they go to sleep at night. How library can cater throughout the day in different activities of the students, faculty, institutions, that's what I say. So, for example, I'll just, take 1 minute only. Okay, if I get up early in the morning, so 6 o'clock, I send to the students, like industry update from Economic Times, Financial Express, Business Standard, Business Line, and Mint. So people will come to know when they go to the class, the faculty, students, yes, what is the update, what's happening in the country. In the economy, in the media, in the e-commerce, in the advertising, in the brand, so many sectors, so they know very well. The next thing is going to be, is the institution in media, send that. Is the faculty publications, send that. Then coming to the curriculum. Is the regularly going curriculum, do you have the course pack you have developed? So, students can, the material they get is a different, but library prepares the course pack, so, related to the each, course, so they come and if they want to read more and develop, so that's the, like, placement is coming, pre-place, first year, junior placement, senior placement, you develop the placement page, everything, but so that's how you become part of the, like, literary committees. You are there, you are in committees of different, so you know very well, okay, how to give input about the library everywhere. Yes. The usage will Yes. automatically, go up. And apart from that, don't sit in the cabin. Get out of the cabin and talk to people, talk to students, have a cup of tea with the students. Yeah. That's Yeah. what we try to do it. Yes. 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 I want the students to take the ownership of the library, because this is my library. I love KEIC. Yes, agree, agree. Hayatji, I think we are running short, so I think we need to be little brief. Yeah, tell me, Hayatji. Yeah. What's the question again? Question was, that what kind of difference will you make? So whether it is about very specific about the library usage, or it's about introducing new services to the library. The question could be focused around this specific point. So what kind of answer we need to have? अब हम अगर हमें सवाल ऐसे किया जाता है कि किस तरह से आप इंप्रूव करोगे लाइब्रेरी की सर्विसेज, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का यूजेज कैसे आप इंप्रूव करोगे, बिल्कुल, तो मैं समझ किस तरह गया। का हमें जवाब देना जरूरी है? बिल्कुल, इसमें बस आपको अगर सवाल इस तरीके से हो रहा है कि अगर पिन पॉइंटेड किसी सर्विस की बात करी जा रही है, जी। लोग पूछते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मैं भी पूछ लेता हूँ कि भाई कोहा में क्या किया आपने, सर्कुलेशन पे काम किया है, कैटलॉगिंग में किया है, टेक्निकल में किया है, वो तो डायरेक्टली मैं एरिया में सिस्टम पे जाके पूछ लेता हूँ, या डी स्पेस में आपने क्या काम किया है, या और कोई रिपोजिटरी पे काम किया है, तो वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन जैसा आप कह रहे हैं, तो उसमें आदमी सीधे सीधे बताया कि बस जो मैंने देखा है आपके पास ये सर्विसेज हैं, इनमें इन ज्यादातर सर्विसेज का मुझे आइडिया है, एक्सपीरियंस है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा डिजिटल आउटरीच सर्विस है जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है। तो एक कैंडिडेट ने बोला कि भाई मैंने जो है वो ये कोर्सेज किए हुए हैं, डिजाइन कोर्स किए हुए हैं, मैंने इन डिजाइन की एक्सपीरियंस है मुझे, तो वो डेफिनेटली वो फॉरन उसकी जो चांसेस थे वो बढ़ गए, उसको वहां पे स्कोर कर लिया उसने। वो मतलब वही जो मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि जो आपके स्किल्स हैं, सब्जेक्ट नॉलेज, स्किल्स, एंड थर्ड थिंग इज योर एटीट्यूड, इन तीनों चीजों को मिला के आपका बनता है हिसाब करना किताब। जरूरी है। तो ये तीनों चीजें इस आंसर में आपको लेके आनी है। स्किल्स पे, स्किल सेट पे इसका क्वेश्चन डायरेक्टली है, तो आप सर्विसेज पे बता के आप ये बताएं कि मेरा ये स्किल सेट स्ट्रांग है और ये स्किल सेट इस तरीके से ये मैचअप करता है यहाँ पे, एंड दैट विल वर्क आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द जनरली द इंटरव्यू, दे आस्क यू अ बिट ऑफ मोर टू द एक्सपीरियंस्ड पीपल और इवन टू द फ्रेशर्स की ठीक है हम आपको भी हायर करेंगे, समझिए, तो 2, 3 या 5 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ, आप कहाँ पे आप प्रगति करना चाहोगे? तो इसका एक किस तरह से हमें इसका जवाब देना है, शैलेश जी?
I mean, what kind of vision do you foresee maybe 2 years, 3 years, 5 years down the line? Should the answer be very elaborate or should be very, crisp and clear? You G. uh, uh, so I mean, when I'm answering this question, I would say, sir, the vision and mission is my boss, first of all. Okay. Because you have to work according to the vision and mission of the organization. And if you see any gap in it, you are going to grow faster in the organization. That is 100% true. You should first know your own strength to contribute to grow and fast in that area. Yes. You should know the organization structure also, because you want to grow to currently where you are Whether there is in the a organization slot or and not. what is the ladder available to grow. Correct. Unless you don't know the ladder, you cannot strategically decide the strategy to go up. Yes. So it means what is next position available. To achieve the next position, how do I contribute to the organization? Absolutely. What is the expectations of the organization? के हमारी प्रमोशन पॉलिसी में ये बता रहा है कि 5 साल में आपको कि भाई इतने पब्लिकेशन करना है, इतनी रिसर्च करना है, इतना लाइब्रेरी सर्विसेज बढ़ाना है, इतना क्या बढ़ाना है, क्या करना है. You should understand that and accordingly you should work. सही है. And if you don't see that, then you create your own room in the organization, space in the organization. Find out, okay, how do I add value to it, Then I think that is more important. And you have to make yourself deserve for it. आप Visible for लाइन छोटी मत करो, आपकी लाइन बड़ी करो, किसी की छोटी लाइन मत करो लाइफ में. So you have to, do that. And one thing is very clear. Deliver more than the expectations, that too before time. You are always going to grow in life. Brilliant. I think absolutely well said. Hayaji, your take. I think vision mission के बाद अगर मैं ऐड करूं तो स्ट्रेटेजिक प्लान में जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही है. तो ट्रेंड्स जो हैं वो अगर हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशन के लोग हैं तो वो एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में भी ट्रेंड्स आते हैं, उनको देख सकते हैं. हमारा जो हुआ था लाइब्रेरियंस डे सेमिनार, तो अगर याद हो तो डॉक्टर ललिता पुलुरु ने वो ट्रेंड्स को भी हाईलाइट किया था. उसके अलावा क्रोनोकाइल, उसके अंदर भी कुछ क्रोनोकाइल के अंदर ट्रेंड्स थे. एक ई बुक आई है रिसेंटली, तो उसके अंदर भी काफी ट्रेंड्स हैं. तो ये एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो तो उसको अपने ट्रेंड्स देखना जरूरी है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं. अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अपस्केल करता रहे, अपनी टीम को अपग्रेड करता रहे. और जो जूनियर लेवल पे भी लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो ट्रेंड्स को देखें और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से अपने आप को अपस्किल करते रहे, अपग्रेड करते रहे और उसको अपने सीवी में डालते रहे ताकि उनके चांसेस बढ़ते रहे. बिल्कुल. लेकिन बहुत ये ऐसा एरिया है जो कि थोड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि कम लोग जो है इस चीज के ऊपर सोचते हैं और कम लोग जो हैं वो इस पे वर्क करते हैं. एक मोनोटोनस सा एक बना लिया है और आई थिंक उससे बाहर आने की जरूरत है. थोड़ा सा मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशन को भी जरूरत है कि ऐसे लोग जो है ज्यादा मतलब इन चीजों के ऊपर बात करें, डिस्कशन हो, सोचे. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर भी काफी बात होनी और काम करना जरूरी है. बिल्कुल. ये बहुत सही बात की है हयात जी आपने कि पूरा जो हमारे सोचने का जो तरीका है, द एंटायर वे इन विच वी लुक एट आवर प्रोफेशन, आवर ओन कैरियर प्रोग्रेशन has to be linked with the way the trends are going to be, how our profession is going to grow, and what are the alignments most importantly we need to do with the other disciplines. जैसे कि we have seen that IT and library science are now like a couple. We can't ignore. And often the mistakes we do, that we tend to side look, with a false hope that it will not overtake us. So this is one of the area I think we should be contemplating. So now I think it's a time that we should be taking some of the key questions which I'm seeing on my chat panel. The one question which is related, which I feel is interesting,
कि अगर पूछा जाए कि आप कौन सा सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, देन व्हाट शुड बी द राइट आंसर? शैलेश भाई. What I mean, the what is your strength? What is your skill? What is your knowledge? बिल्कुल. See, based on that, everything will be decided. You know, you cannot having sometimes degree doesn't make any sense. Degree is required to qualify yourself, but apart from the degree, you should be competent, capable to deliver also. That makes you to earn the things, you know. Because I've seen the people who achieve the position by way of getting the degree, but you know they cannot sustain in the organization for a long time. So what you have to have the capability to deliver. Then only this is possible. Otherwise, if you are capable, I mean, even you joined at a lower level, but because of your contribution in the organization, in the profession, you will grow fast. You can see that, you know. Yeah, but Shailesh bhai, the question is that how do I answer this? If they ask me that, okay, what is your salary expectations? तो मैं किस तरह से उसको मैं जवाब दूंगा? See, one base one can take is the government structure. You know, if somebody is coming to the academic world, there is a clear-cut structure So, available. okay, you fit into that. Yeah. Yeah, you fit in that. You know, Okay. if you are Okay. going to the public library kind of thing, there is a structure there. They provide, you know. So as If per you the are coming scale. yeah, if you As are per the coming to scale. the private organization, you know, and private companies and going, it all depends on your capability. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और दूसरा सवाल यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि जब भी इंटरव्यू में हम जाते हैं तो कई बार होता है कि we may not be completely comfortable in the language, like if the formal language is English, as the case is in in India most of the time. तो किस तरह से उनको कहा जाए कि I'm not so good in a given language. तो question is which language should prefer to communicate with the interview. तो हाउ डू आई टैकल दिस? मतलब हम तो जैसे देखिए, अगर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं लाइब्रेरी ट्रेनिंग्स का, तो हर साल होता है, what तो are हम the बोल देते हैं कि आपको जो भी है वो आप बता दीजिए. what are I the mean, you can official speak in language. languages of that state, their institution? That is more Okay, important. okay, okay, got it. Hayaji, what do you think? I think language should not be a barrier at all. So मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो जो भी And लैंग्वेज में आप and जवाब I देना think चाहो. हाँ, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं तो प्रेफर करता हूं कि इंग्लिश में बात करें तो समझ में आएगा कि उसने इंग्लिश में भी कितना टेक्निकल वर्ड्स सही वगैरह है. की जो कितनी पकड़ मजबूत है. लेकिन अगर वो हिंदी में या हिंदी में, अभी गुजराती तो मुझे नहीं आती, तो वो अगर हिंदी में बात करता है तो हिंदी में भी नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज कि हम उसकी बात समझ पा रहे हैं. Yeah. बिल्कुल, और अगर बिल्कुल. कोई वो जो कोई है, उसको लगता है कि वो इंग्लिश में कर ही नहीं पाएगा, उसकी इंग्लिश है ही नहीं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए सही से, तो उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है. आई थिंक ही शुड नॉट ट्राई इंग्लिश दैट मच सही अनलेस कि है. वो अपनी इंग्लिश करेक्ट. स्किल पे इम्प्रूवमेंट लाए और उसको सीखे. वो बिल्कुल. हिंदी में ही इंटरव्यू दे, ज्यादा बेटर है. और इंग्लिश में वो मैं एक चीज कह सकता हूँ, जो मैं या इस पॉइंट पे कि जो लोग कम्युनिकेशन से थोड़ा सा, कि कम्युनिकेशन में जब बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तैयारी करके, जैसे कहते हैं I'm in रट्टा a मार के, webinar meeting. फोन પછી કરું. तो थोड़ी सी तैयारी करके जाएं तो इंग्लिश में कुछ आंसर वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कुछ हिंदी में दे सकते हैं, मिला जुला के भी काम चला सकते हैं. बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल. कहीं वो अगर फंसते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को, इंग्लिश बेटर में टू नहीं समझा पा रहे स्विच हैं, ओवर. तो दे कैन स्विच एनी टाइम. स्विच ओवर. ओके. आई थिंक और दैट शुड यस, नॉट बी अ यस, प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. नहीं, सही है. Because लास्ट. organization हाँ, also बोलो. expect, you know, the person, you know, like, you know, you go to certain organization where I mean, people speak English, you know, then they expect, okay, your communication skill should be there, you know. So, यस, यस, वो भी तो यस, है. यस. At times it is a requirement नहीं, because बिल्कुल. yeah, नहीं, बिल्कुल. so a particular language is a requirement. यही नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही रिक्वायरमेंट है, कहीं पे हिंदी नहीं, सही रिक्वायरमेंट है. है, कहीं पे नहीं, गुजराती रिक्वायरमेंट है, कहीं रीजनल लैंग्वेज बंगाली That is what रिक्वायरमेंट I'm है. saying. बिल्कुल, It is the बिल्कुल, requirement of the institute. Yep. बिल्कुल, बिल्कुल. और ओके, लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफी मतलब आई वांटेड टू इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट, लेकिन चलिए मैं आ गया तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि हम कई बार हमें इंटरव्यू क्लोज करने से पहले हम उनको पूछते हैं, वी आस्क देम दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग. तो क्या पूछना चाहिए, व्हाट वी शुड आस्क देम? शैलेश भाई.
I have seen and experienced people, there are certain things, they don't clarify, they don't ask in the beginning, at the time of interview, and then when they join the organization, they start facing, when they come to the environment, oh, this is not there, this is, so whatever doubt you have in your mind, whatever questions you have, which comes from your inner will, you should clarify all those things. Absolutely. About I the completely salary, agree. about the perks, about the housing, their positioning in the organization, their reporting, everything they should clarify. Yes. Yes. Don't give any, gray area. कि after joining you, अरे मैंने ये क्यों नहीं पूछा, ये organization में तो ये है, वो है. Don't do that. Yes. Yes. Whatever you want, whatever you deserve, you ask for it, because this is the time you are equal to them. Once you Correct. join the organization, Absolutely. you Absolutely. have not upper hand. So this is Yes. what I have Yes. to say. Yes. Hayat ji. Yes, आई थिंक इसमें बहुत डिपेंड करता है कि एचआर राउंड चल रहा है कि टेक्निकल राउंड चल रहा है, और अकॉर्डिंगली आप सवाल पूछ सकते हैं. अगर एचआर राउंड है तो आप सैलरी से रिलेटेड और अपने पर्क्स और अपनी सही है. प्रिविलेजेस से रिलेटेड आप एचआर से बात करेंगे. अगर मान लीजिए कि वो टेक्निकल राउंड चल रहा है और तो उसमें एचआर से रिलेटेड या सैलरी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे. नहीं होंगे. सही है. तो उसमें आप इस तरीके की चीजें पूछ सकते हैं, जैसे कि एक आध जगह मैंने खुद पूछा है कि भाई आपके पास एम्प्लॉई के डेवलपमेंट के लिए क्या यूनिवर्सिटी Yeah, के that's a अंदर. right question. हाँ. Right question. Yes. और Yes. अगर एम्प्लॉई जो है वो कहीं पे जाके अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहता है या कहीं पे वो Do you अपना facilitate? सेमिनार Yes. करना चाहता है, कहीं पे सही कुछ, है. तो उस सही तरीके है. के टाइम पे छुट्टी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, हम्म. और ग्रोथ के लिए यूनिवर्सिटी के क्या प्लान्स हैं. Correct. तो Correct. इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से राउंड पे हैं आप. अगर आप टेक्निकल राउंड में हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जब आप एचआर राउंड में हैं तो आप सैलरी और रिपोर्टिंग बॉस और वो सारी चीजें पूछ सकते हैं टू क्लियर योर डाउट्स. Bilkul. Thanks, Hayat ji. And I would add, something that here you have an opportunity to show that your intention, something, the question which asked you that, why did you leave leaving your current job? This is where you can bring back that focus in saying that something that, whether organization is open to new learning opportunities. That suppose tomorrow, if I want to enroll for certain courses or certificate courses, will the organization support me? Of course, I am not going to take, do during my office hours, but will it be open in accepting, me in taking up such learning opportunities? So इसमें क्या होता है कि ये आपका पॉजिटिवली लिया जाता है कि ये बंदा आगे सीखने के लिए तैयार है. ओके. और उसकी जो पूरी एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो आपके सामने आप रख रहे हो. सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज जनरली एक्सपेक्टेड. आप जब पूछते हो तो अपार्ट फ्रॉम दी टिपिकल सैलरी या जो भी ग्रोथ एरिया, आप वो भी रख सकते हो जहां से उनको पता चले कि योर इंटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी म्यूचुअली ग्रोथफुल both for you and for the organization. So with that, I would hand over mic to Mrs. Barucha for closing remarks, and thanks both of you. Thank you. During the interview, I feel it's very important to have a positive attitude and to try and showcase the passion which we have for our Absolutely. profession. Very true. Passion is so important. Yes. Now, if any of the students would like us to conduct any training programs or any useful webinars, please do let us know. And I wish there would be more interaction between the different LI schools in Gujarat. I think that would really help the students and even the faculty. I thank the resource persons, Dr. Shailesh Yakni, Dr. Hayat Ahmed, and especially Mr. Manish Makad, and especially thank all the participants. Thank you so much for joining, and I'm sure you must have benefited from this webinar. Thank you so much. Thank you. Thank you, all of you. Have a nice day. Bye. Thank you. Goodbye. God bless. Thank you all. Bye.